Good morning to all my dear students. Today in this accountancy lecture we are going to study cash book. Okay, it is one part of your subsidiary book and from exam point of view this is most important topic. Exam में ये आने ही वाला है and at the same time you have to make all the points clear over here because this cash book is not going to happen for the 11th only. Okay, for the 12th standard also you are going to face this topic. ओके सो बेटर है अभी से सारे डाउट्स क्लियर करो एंड एट द सेम टाइम काइंडली फोकस्ड ऑन दिस लेक्चर. ओके सो नाउ व्हाट इज कैश बुक? In the journal entries we have studied different types of transactions. Okay, based on those transactions we bifurcate all those transactions in debit side and credit side. Okay, but उससे इतना ज़्यादा पता चलता है कि exactly कैश कितना आया बिजनेस में, how much cash comes in and how much cash goes out, how many are the cash transaction and how many are the credit transaction. अगर मैं आपको 5 मिनट का भी टाइम दूँ तो भी आप नहीं बता सकते. Okay, because in the business for that particular month there are number of transactions takes place. Some of them are from cash basis, some of them are for credit basis and some of them are not cash and not क्रेडिट. ओके, उसका कुछ अलग ही टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं. ओके, वो जर्नल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जनरल ट्रांजेक्शन्स. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो बेसिक क्या है, बिजनेस कैन रन स्मूथली बाय हैविंग कैश इन हैंड. And how much is the cash there in my business? So that thing I am going to find out by preparing cash book. Okay, and at the same time cash book बनाने के लिए you have no need to make the journal entry, you have no need to make ledger, but yes, the format of this cash book is same as like ledger. Okay, that is what in a T shape format जो होता है, left hand side is debit side, right hand side is credit side. In the same manner the cash book we are going to prepare. Okay, so first thing there are certain features or rules I have given over here. ओके, कैश बुक तो उससे ईजी जाएगा अगर ये पॉइंट्स अगर आप ठीक से पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो तो. See, cash book is a book which records all the transactions relating to cash receipts and cash payment. Underline this. Okay, cash, either receipt of cash or either payment of cash. सिर्फ उतने ही सारे transactions को this cash book will cover. All of you clear? Next is it is made on मंथली बेसिस. मैंने पहले भी बोला फॉर ईच एंड एवरी मंथ, मे मंथ, जून मंथ, जुलाई एक्सेट्रा, सारे मंथ के लिए सेपरेट कैश बुक बनता जाता है. ओके, एंड एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ वी विल मेक द बैलेंसिंग फिगर, वी विल फाइंड आउट दैट बैलेंसिंग फिगर एंड द सेम बैलेंसिंग फिगर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ. Okay, it is real account book. Yes, of course, because the name is suggesting what? Cash. So cash is what? Cash is always having real account और इसको asset account बोलते हैं. So this is real account book. So real account book के हिसाब से these are the two rules only which only you have to follow. What are those rules? Inflow means cash आना. What does it mean? Receipts of cash. What does it mean? Cash comes in. कैश बिजनेस में आता है मतलब हम कैश को क्या कर देते हैं, बिजनेस में प्लस कर देते हैं. एंड बिजनेस में प्लस करते हैं मीन्स व्हाट? डेबिट करते हैं. द डायरेक्शन ऑफ सच कैश इनफ्लो इज डेबिट साइड. Now next is cash outflow. Outflow means payment of cash. Payment of cash means what? Cash goes out from my business. What does it mean? मैं मेरे जेब में से, मेरे बिजनेस में से कैश को माइनस कर दूंगी एंड माइनस करूंगी इसीलिए what I will do is I will choose the credit side to post the entry for minimizing cash from my business. Okay, now moving towards next, there are certain types of cash book. ओके, बट यू हैव नो नीड. गुड न्यूज़ इज़ आपको ये सारे कैश बुक के सारे टाइप्स आपको नहीं पढ़ने हैं. फॉर योर सिलेबस देयर इज़ सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक, ट्रिपल कैश बुक, पेटी कैश बुक. ओके, ये सारे 4 कैश बुक है लेकिन आपको पढ़ने हैं सिर्फ कम से कम
3 या 4 कैश बुक के टाइप्स. ओके, व्हाट आर दोज टाइप्स आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगल कैश बुक. Single cash book is the book wherein you will record only and only all cash transaction. Okay, this we are going to study for today. Okay, next is double column cash book. Double column cash book में there will be 2 columns to be recorded as an amount. Okay, amount में 2 columns रहेंगे. First amount column would be cash column and second is discount column. If I am purchasing goods for cash, so what does it mean? I am making payment of cash, but at the same time अगर मुझे डिस्काउंट मिला होगा so मैं डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट फिगर लिखूंगी. दिस इज व्हाट कैश एंड डिस्काउंट डबल कॉलम कैश बुक. देन बैंक एंड डिस्काउंट में बैंक अमाउंट आई विल शो एंड एट द सेम टाइम आई विल शो डिस्काउंट अमाउंट. एंड लास्ट कैश एंड बैंक. ओके, दिस इज राइट ओवर देयर इन योर सिलेबस. सो डबल कॉलम कैश बुक भी हम पढ़ने वाले हैं वेयर इन वी विल स्टडी to prepare cash book based on cash side and bank side. नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ट्रिपल कॉलम में सारे के सारे अमाउंट्स कॉलम आएंगे. दैट इज़ व्हाट कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट एंड डिस्काउंट अमाउंट. ओके, नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक अकाउंट. जो ट्रांजेक्शन छोटे छोटे होते हैं चाय पानी वाले ट्रांजेक्शन, दैट इज़ पेमेंट फॉर टी, पेमेंट फॉर पेन, पेंसिल, रबर और एक्सेट्रा अनदर. ओके, जो जनरल स्मॉल इनकम्स और स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल दो स्मॉल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस वी विल कवर्ड इन पेटी कैश बुक. ओके, this is also there in your syllabus. So for today we are going to study single column cash book, later on double column cash book, under it cash and bank account, and then is petty cash book. Okay, ये आने वाले lectures में हम सीखने वाले हैं. Next rule for cash book is credit transaction. Underline it. Credit transaction are not recorded in cash book because credit transaction में what we show, we only show the name of the party, that is either debtor or creditor को ही लिखते हैं for the credit purchase or credit sale. But such type of transactions we simply have to ignore for preparing cash book. All of you clear? And the final is the format. सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द पीरियड ऑफ दिस मंथ, मंथली बनता है ये. और इसमें सी देर आर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर अवेलेबल. डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स. इसी पर्टिकुलर्स को यू कैन राइट एज रिसिप्ट कॉलम. ओके, this column is receipt column. Next is voucher number. Voucher number is what? Bill number from which bill you are referring for mentioning or for posting such entry in the debit side of the cash, and which voucher number you are referring for the making entry in the credit side of the cash book. Okay, this is what the cash voucher number. Ledger folio number. Okay, this is what we take it from ledger side. And next is amount column, that is what cash receipt column. Next is again for the credit side same, date, particulars, voucher number, ledger folio and amount. Okay, so all these are the column of cash book. Okay, if you want then you can simply ignore this voucher number column. Okay, so in your textbooks also they have given only ledger folio, that is what same ledger का जो format होता है the same format they have given for cash book. And debit side of the cash book is receipt side, credit side of the cash book is payment side. So rather than to write down particulars, you can simply write as receipts and payments also. Okay, so यहाँ तक clear है. आगे बढ़े. Moving towards next is our transaction. Different types of transactions we have to study. Okay, so here I have given the number of transactions. Okay, you can simply take the screenshot of the same. अब आगे जाके बाद में लिख लेना ये सारे transaction, and based on this transaction what I am going to do is I am going to prepare one cash book, and the last finally what I am going to do is मैं बैलेंसिंग फिगर आपको निकाल के दिखाऊंगी कि ये मेरे पर्टिकुलर ट्रेडर का, दैट इज़ मेशस रूपा ट्रेडर्स का कैश बुक है. इन द कैश बुक दिस अमाउंट्स वी हैव रिसीव्ड, दिस अमाउंट्स वी पेड, एंड लास्ट डेट, इन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इतना अमाउंट मेरे पास बचा जो मैं क्या करूँगी आगे के मंथ में ट्रांसफ़र कर दूँगी. ओके,
So without wasting time, we'll start with the transactions. Okay, so starting with the first transaction, in the books of Messrs Rupa Traders, prepare cash book from the following transactions. हमने कुछ rules भी पढ़े हैं, so based on those rules, based on that format, we are going to start with cash book. On 1st November, cash in hand rupees 30,000. सो कैश इन हैंड 30,000 क्या है? ये लास्ट मंथ में जो बचा हुआ कैश है वो उन्होंने क्या किया है, इन द नेक्स्ट मंथ दे हैव कैरी फॉरवर्ड. ओके, सो इसीलिए ऑन 1st November दिस एंट्री इज गिवन, दैट इज कैश इन हैंड रुपीज़ 30,000. सो मेरे बिजनेस में कैश है, इन हैंड है, सो इट इज़ ऑन डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट में सारा बिजनेस का पड़ा हुआ कैश हम लिखते हैं. सो वी विल फर्स्ट कंसिडर द डेबिट साइड. ओके, ऑन November 1st कैश इन हैंड को हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. ओके, no need to write narration anything. Okay, nothing. Next is November 4th, cash received from Gurmeet 12,000. We are receiving cash from Gurmeet on November 4. Receiving मतलब receipt side में ही लिखना पड़ेगा. November 4 to Gurmeet's account rupees 12,000. Once you clear with all the concept, this making of cash book is very simple enough. Okay, and from exam point of view भारी मार्क्स रखने वाला टॉपिक है ये, सो इसको प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा आपको. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट रुपीज़ 6,000. सो इंश्योरेंस पेड मतलब कैश बिजनेस से आउट हो गया है कैश. सो हियर आई एम राइटिंग डेट इज November 8 by insurance account rupees 6,000. Next is November 13th, purchase furniture 13,800. Furniture is my fixed asset, so I am going to write down the name as furniture account. Okay, not purchase account. मैंने purchase किया furniture 13,800, so cash मेरे business से out होने वाला है. So मैं क्या करूँगी? Okay, by mistake I have written over here receipts. This side is not receipt, this side is payment. Okay, कभी कभी mistakes हो जाती है. See, purchase furniture rupees 13,800. So I am making payment of this 13,800 on November 13 by furniture account for rupees 13,800. नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 28,000. मैंने गुड्स सोल्ड किए और बदले में कैश रिसीव्ड किया. सो रिसिप्ट साइड में ऑन November 16 2 sales for rupees 28,000. ओके, ओनली जस्ट थिंक अबाउट इट कि वेदर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, वेदर इट इज़ कमिंग इन. सो यहाँ पर इफ़ इट इज़ गोज आउट देन ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज़ ऑन पेमेंट साइड. ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू हैव टू फॉलो, दैट इज़ व्हाट, डेट वाइज आपको सारे ट्रांजेक्शंस क्लियर करने हैं. Now next is on November 17 purchase goods from Mudit in cash rupees 17,400. मुदित से मैंने परचेस किए गुड्स. मेरे परचेस किए मतलब क्या, मैंने पेमेंट किया. सो November 17 बाय एंड परचेस किए हैं गुड्स. ओके, मुदित से ऑन कैश बेसिस. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ पार्टी. व्हाट आई विल राइट इज सिंपली परचेसेस by purchase account 17,400. next is purchase stationery rupees 1,100 on November 20. परचेस किया मतलब फिर से मैंने पेमेंट किया, मैंने स्टेशनरी लिया, बदले में पे किया पैसा on November 20 by stationery account rupees 1,100.
नेक्स्ट इज कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,500. मैंने रुक्मणी को कैश पेड किया ऑन नवंबर 24. फिर से मेरे बैंक खाते में से कैश चला गया. पेड टू रुक्मणी, सो रुक्मणीज अकाउंट for rupees 12,500. Next is sold goods to Kamal on credit. See, this is sold goods to Kamal on credit. तो ये मैंने क्या किया, सेल्स किया, इनकम हैज़ बीन जनरेटेड बट नॉट येट रिसीव्ड. So what does it mean? This is credit entry, but for the cash book we are going to simply post or we are simply recording only and only cash transaction. This is my credit transaction. तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इग्नोर करके छोड़ दो. ऑल ऑफ यू क्लियर? नेक्स्ट इज November 30th पेड मंथली रेंट ऑफ ₹2,500. ओके, वेरी लेस इट इज. पेड किया मतलब कैश चला गया ऑन November 30 by rent account for ₹2,500. Next is paid salary 3,500. Salary paid किया, so on November 30 by salary account 3,500 and deposited in bank ₹8,000. So here जस्ट ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, सो व्हाट डज इट मीन, मैंने बिजनेस का कैश यूज़ किया टू डिपॉजिट इन अ बैंक. सो मेरे बिजनेस से कैश माइनस हुआ और बैंक में प्लस होने वाला है. बट हियर वी आर मेकिंग कैश बुक. मेरे बिजनेस से कैश आया या चला गया. सो कैश माइनस हुआ है फ्रॉम बिजनेस, माइनस हुआ. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ऑन November 30 by bank account 8,000. So here we are completed our cash book transaction. Now next stage is what, making the total. Okay, this 30,000 plus 12,000 plus 28,000. So now here we have the total of debit side is 30,000 plus 12,000 and 28,000, that is 70,000. Okay, I am writing this amount in the both side, both the column, that is debit column and credit column, and making the double underline. It shows that we are closing this account. This account has been closed. Okay, so this is what the receipt 70,000 हमारे बिजनेस में है. ओके, आउट ऑफ विच हाउ मेनी अमाउंट वी स्पेंड, हमने इतना सारा खर्चा किया. एंड द टोटल ऑफ दिस इज 64,800. आई एम राइटिंग ओवर ईयर 64,800. सो सिंपली हमें क्या करना है, 70,000 में से वी हैव टू लेस 64,800. दैट इज टोटल ऑफ पेमेंट साइड. ओके, एंड बैलेंसिंग फिगर वुड बी 5,200. बैलेंसिंग फिगर को ऑलवेज मेक राउंड, ऑलवेज मेक सर्कल. और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. एंड ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कब करने वाले हैं, इन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ. ओके, मेरे बिजनेस में से इतना पैसा आया, this is the income, cash income, and this is cash expenses, and finally मेरे पास 5,200 कैश बच गया. ओके, so this is the amount which left in my business. so ये बिजनेस में से ये अमाउंट मैं निकाल दूंगी. नो, आई एम गोइंग टू ट्रांसफ़र दिस अमाउंट फॉर द नेक्स्ट मंथ. जैसे ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट मंथ में से ये पर्टिकुलर नवंबर मंथ में शिफ्ट हो गया, नवंबर 2010 के लिए. नाउ फॉर द नवंबर के बाद क्या आता है, फॉर द दिसंबर 2010 के फर्स्ट डेट को व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड 5,200. okay, and here we are closing our cash book. okay, you can just take a snapshot, that is screenshot आप ले सकते हो, and then write it down in your notebook. okay,
Now all of you clear? So this is we are completing with our cash book. So in the next month of the December 1st date, अगर मुझे मेरे बॉस ने पूछा कि हमारे पास कितना कैश अभी पड़ा है, so what I will tell him, we are having 5200 in our cash book. All of you clear? So this is what cash book. Here we are done for the day. Thank you.